Today we will discuss about the example of eukaryotic cell, that is our plant cell. And in the previous video we have already discussed about the prokaryotic cell, where you have seen that all the prokaryotic cell do not have a true nucleus, but they have a nucleoid and they do not have a membrane bound organelles. इसका मतलब है कि जो आपके prokaryotic cell है उनमें nucleus नहीं होता है, nucleus जैसा कुछ होता है जिसको हम nucleoid कहते हैं, और उनमें membrane bound organelles नहीं पाए जाते हैं. Then in the second video we have discussed about the common characteristic feature of a eukaryotic cell, where we have seen that all the eukaryotic cell consist a true nucleus. मतलब जो उनका nucleus है वो membrane के अंदर present होता है, that is a nuclear membrane, and then we have seen they have a numerous number of membrane bound organelles. और जो आपका यूकैरियोटिक सेल है वो आपके हायर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है. Now in today's class we are going to discuss about the plant cell. So we have to keep in mind two features of plant cell. First is that they have cell wall, big vacuole and plastids. These are the cell organelles which are exclusively present in a plant cell. Then second thing is that they are bigger than the animal cell. आपका जो plant cell होता है वो animal cell से बड़ा होता है. And in your plant cell, cilia, flagella, lysosomes and centrosomes are absent. मतलब आपके plant cell में cilia, flagella, lysosomes और centrosomes नहीं present होते हैं. ये जो features हैं वो आपके animal cells के हैं, और आपका animal and plant cell both are the example of eukaryotic cell. मतलब आपका plant और animal cell दोनों example है eukaryotic cell का, और आज के इस वीडियो में हम plant cell के बारे में पढ़ेंगे. So अभी हमने देखा कि प्लांट सेल में सेल वॉल, बिग वैक्यूल और प्लास्टिड्स पाए जाते हैं. ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. तो जो प्लास्टिड्स है, लेट अस डिस्कस अबाउट द प्लास्टिड इन डिटेल्स. अब हम प्लास्टिड्स के बारे में डिटेल में समझेंगे. तो जो एक प्लांट्स होता है उसमें 4 तरह के प्लास्टिड्स पाए जाते हैं. First chloroplast, then is the chromoplast, then is the leucoplast and then is the gerontoplast. सबसे पहले आता है क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट सबसे कॉमन टाइप का प्लास्टिक्स है जो कि जनरली मैक्सिमम प्लांट सेल में पाया जाता है. तो जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर बहुत सारे थैलाकोइड्स प्रेजेंट होते हैं, और इसी थैलाकोइड के अंदर आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. सो वी कैन से दैट दिस इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो अगर हम क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन के बारे में देखें तो इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस बिकॉज इट कंटेन्स पिगमेंट कॉल्ड ग्रीन कलर पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. उसके बाद आता है आपका क्रोमोप्लास्ट. तो बेटा आपको जो क्रोमोप्लास्ट है उसका मेन काम है टू सिंथेसाइज एंड स्टोर पिगमेंट. तो जो आपके प्लांट में ग्रीन कलर छोड़ के और जो भी कलर होते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, वॉट एवर द कलर यू सी, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द क्रोमोप्लास्ट. जितना भी प्लांट में कलर होता है एक्सेप्ट ग्रीन, क्योंकि जो ग्रीन कलर है वो क्लोरोप्लास्ट इम्पार्ट करता है. उसके अलावा आपको जो भी कलर दिखाई देते हैं एक्सेप्ट ग्रीन एंड व्हाइट, इट इज द कलर इज गिवन बाय द क्रोमोप्लास्ट. तो जो क्रोमोप्लास्ट है उसका काम होता है कलर इम्पार्ट करना और पिगमेंट को सिंथेसाइज और स्टोर करना. उसके बाद आता है आपका ल्यूकोप्लास्ट. जैसे कि नाम में ही ल्यूकोवर्ड जो होता है उसका मतलब होता है कलरलेस. तो ल्यूकोप्लास्ट ऐसा आपका प्लास्टिड है जो कि कलरलेस होता है. तो ये बेसिकली रूट में प्रेजेंट होता है और ये स्टार्च, लिपिड, प्रोटीन को स्टोर करता है, और उसके अलावा इट कैन सिंथेसाइज योर अमाइनो एसिड एंड योर फैटी एसिड. इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द नीड ऑफ द प्लांट. अगर प्लांट को स्टोरेज करवाना होगा स्टोर करेगा, सिंथेसिस की जरूरत है सिंथेसिस करेगा. इसका काम बहुत फ्लक्चुएटिंग है, डिपेंड्स अपॉन द नीड ऑफ द प्लांट. फिर जो आपका ल्यूकोप्लास्ट है इट्स अगेन डिवाइडेड इनटू 3 टाइप. वन इज द अमाइलोप्लास्ट. अमाइलोप्लास्ट इज द लार्जेस्ट ल्यूकोप्लास्ट, सबसे बड़ा वाला ल्यूकोप्लास्ट होता है, और इसका काम होता है स्टार्च को स्टोर करना. तो ज्यादातर आपके प्लांट सेल में आपको अमाइलोप्लास्ट दिखेगा. क्यों दिखेगा? क्योंकि हमें मालूम है कि जो प्लांट सेल होता है वो अपना फूड जो है स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है. उसके बाद दूसरा है आपका प्रोटीनोप्लास्ट. जो बेटा प्रोटीनोप्लास्ट है, नाम में ही आंसर है प्रोटीनोप्लास्ट, मतलब ऐसा ल्यूकोप्लास्ट जिसका काम है प्रोटीन को स्टोर करना. उसके बाद है आपका इलायोप्लास्ट. हाँ, तो आपको जो प्रोटीनोप्लास्ट है बेटा इट इज टिपिकली फाउंड इन सीड. ये ज्यादातर आपको सीड में ही मिलेगा. उसके बाद है इलायोप्लास्ट. इसका काम है फैट एंड ऑयल को स्टोर करना, और ये भी स्पेसिफिकली आपको सीड में ही मिलता है. सो दिस फॉर ए कंप्लीट एंड डिटेल्ड स्टडी ऑफ द योर प्लास्टिड्स. सो जनरली व्हेन वी ड्रॉ अ प्लांट सेल, जब हम प्लांट सेल बनाते हैं तो हम बाकी सारे प्लास्टिड्स को नहीं शो करते हैं, हम सिर्फ क्लोरोप्लास्ट को शो करते हैं. नाउ लेट अस ड्रॉ अ टिपिकल प्लांट सेल.
Before we draw a typical plant cell, let us discuss the shape. तो बेटा जो शेप होता है आपके प्लांट सेल का वो ज़्यादातर क्यूबॉइडल या रेक्टेंगुलर दिखता है. एक्चुअली जो प्लांट सेल है उसमें क्या कहते हैं आपका रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ये शेप दिखाई देता है. सो लेट अस ड्रॉ. सो सबसे पहले बेटा हम सेल वॉल बनाएंगे. सो आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉ अ थिक सेल वॉल. इसको थोड़ा थिक कर देते हैं. ये जो सेल वॉल होता है दिस इज अ डेड पार्ट ऑफ अ प्लांट सेल. प्लांट सेल का ये डेड पार्ट दैट्स नॉट लिविंग एंड इट इज फ्रीली परमिएबल. मतलब ये अपने अंदर और बाहर किसी भी चीज को आने और जाने देता है. यू माइट बी नोइंग दैट योर सेल मेम्ब्रेन इज semi-permeable or you can say selectively permeable. So here we have drawn our cell wall. Cell wall के बाद हम इसके अंदर बनाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब हम इसमें सबसे पहले बनाएंगे वैक्यूल. तो जो आपका प्लांट सेल होता है उसका 90% एरिया जो है वो वैक्यूल कवर करता है. सो मेक अ बिग वैक्यूल. लेट अस मेक अ वेरी वेरी बिग वैक्यूल बिकॉज अ वैक्यूल कवर्स ऑलमोस्ट द 90% ऑफ द सेल एरिया. उसके बाद हम सबसे पहले बनाएंगे न्यूक्लियस क्योंकि हमें मालूम है कि एक यूकैरियोटिक सेल का सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है उसका न्यूक्लियस. तो लेट्स ड्रॉ. ना हमें मालूम है कि न्यूक्लियस में छोटे छोटे बीच में छोटा छोटा स्पेस प्रेजेंट होता है जिसको हम न्यूक्लियोपोर कहते हैं. ये हमने बना लिया. इसके बाद वी विल ड्रॉ दी and then dense part. This is a nucleus and this thread-like part is a chromatin fiber and this fluid is your nucleoplasm. और हमें मालूम है कि जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है which makes it rough endoplasmic reticulum. Always remember that this ribosome is present on the surface. हमारा न्यूक्लियस बन गया. इसके बाद हम इसमें बनाएंगे गोल्जी एप्परेटस. यहाँ पे गोल्जी वेसिकल्स हो गए. उसके बाद आपको प्लांट सेल में वी विल ड्रॉ क्लोरोप्लास्ट. तो ये जो सर्कुलर लाइक स्ट्रक्चर है बेटा ये थैलाकोइड्स है जिसके अंदर आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. इट इज डबल मेम्ब्रेन सो वी विल मेक अ डबल लेयर. देन वी विल ड्रॉ माइटोकॉन्ड्रिया. Now we will draw the exoskeletons. So here these are hair-like structure. These are your microfilament. Then we will draw these
These are your microtubule, and these are your intermediate filaments. Then we will draw, this is your peroxisomes, and we will draw here, these are amylose, because you know that plant cells store its food in the form of starch. Now let us do the labeling. So please, this is your cell wall, then this is your plasma membrane, and this is your smooth endoplasmic reticulum, because see, there is no ribosome present on it. Then this is your rough endoplasmic reticulum, this is your nucleus, and this was nucleolus, this is your Golgi complex, this is your Golgi vesicles, Chloroplast, this is your mitochondria. Now let us label this. This is your vacuole. It occupies almost 90% area of a cell. Then this is your microfilament. This is your intermediate filament. Then is your microtubule. And this free area where fluid is present. This is your cytoplasm. And this is your, I told you that this is the amyloplast, okay? Amyloplast, largest type of your leucoplast, and it contains stores. And this is your microbody, basically peroxisomes. Let us label here. So here this is our typical plant cell. So we have already drawn our typical plant cell. Now let us done a quick revision. तो बेटा आपका जो प्लांट सेल है उसमें सारे फीचर्स तो कॉमन है जो कि आपके यूकैरियोटिक सेल्स में होता है, लेकिन यहाँ पे क्या जो तीन चीजें आपको ध्यान देनी है, पहला है सेल वॉल. ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्लांट सेल का, दैट इट कंटेन्स अ सेल वॉल. और जो प्लांट का सेल वॉल होता है, इट इज बेसिकली कंपोज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. और बेटा ये डेड पार्ट होता है. और आपका जो प्लांट सेल है का जो सेल वॉल है, इट इज कंप्लीटली परमिएबल, मीन्स इट अलाउज एवरीथिंग टू कम इनसाइड एंड एवरीथिंग टू गो मूव आउटसाइड. देन इज द आपका वैक्यूल. जो वैक्यूल है, यू हैव टू मेक अ बिग वैक्यूल, क्योंकि जो प्लांट सेल का वैक्यूल है, इट ऑक्यूपाई ऑलमोस्ट 90% एरिया ऑफ अ प्लांट सेल. तो जो इतना बड़ा आपका प्लांट सेल का वैक्यूल है, ये क्या करता है, इट स्टोर वाटर, मिनरल्स, इवन इट स्टोर्स योर फूड. देन ऑल्सो इट समटाइम इट ऑल्सो हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ वेस्ट मटेरियल. उसके बाद थर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर है क्लोरोप्लास्ट. तो जो क्लोरोप्लास्ट है, इट कंटेन क्लोरोफिल्स, दैट इज व्हाई इट हेल्प्स इन द फोटोसिंथेसिस. अब ये जो आपका बेटा क्लोरोप्लास्ट है, जब ये मेच्योर हो जाता है एजिंग की वजह से, इसमें क्या होता है, इट कन्वर्ट्स एंड फॉर्म द जेरेंटोप्लास्ट. देयर वी हैव डिस्कस इन द प्लास्टिड. तो जो जेरेंटोप्लास्ट होता है, फिर वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प नहीं करता है. देन इट ओनली हेल्प्स इन द सिंथेसिस and the storage of the food particles or your fat, starch, anything. Then
Rest everything is common in both plant and animal cell. This is only is uncommon, that is amyloplast. It is a type of plastid, leucoplast का होता है और ये सबसे बड़ा form of leucoplast है, and it helps in the storage of starch. Always remember, amyloplast helps in the storage of starch because हमने ये बार बार पढ़ाई करी है कि जो आपका जो प्लांट होता है वो अपना जो फूड है ग्लूकोज के फॉर्म में बनाता है लेकिन स्टोर करता है स्टार्च के फॉर्म में. सो इट इज प्रिपेयर्ड हियर ग्लूकोज एंड स्टोर्ड हियर इन द amyloplast in the form of starch. So if you have any doubt related to this your plant cell, you can comment me, and in the upcoming video we will discuss about the animal cell, that is the second example of your eukaryotic cell. Thank you and have a nice day.